पूरा पैसा, वो भी 4 दिन काम करके? Impossible. Well, not so much. Hello guys, welcome to Rational Rooster, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं about a very peculiar idea among the newly proposed labor codes, the 4-day work week. Specifically, what does it mean? Why companies might and should consider it? Why should you give a shit about it? And how it can lead your way to financial freedom? Stick with me till the end of this video to find out. So without further ado, let's roll. If you're watching this video, it probably means that आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, which again means आप या तो हफ्ते में 5 दिन गाड़ घिसने वालों में से हो या those poor souls जिनको हफ्ते में 6 दिन गाड़ घिसाना पड़ता है. So before I tell you what our labor ministry did, let me tell you what exactly 4-day work week is. सीधी भाषा में इट्स अ कंप्रेस्ड वर्क स्केड्यूल इन वर्क प्लेस जहां आपको 7 दिन में 4 दिन काम करना पड़ता है एंड यू गेट 3 पेड हॉलीडेज. Yes, 3 holidays, all paid. A great reason to be excited about, right? Ideally, इसका मतलब है if you work 8 or 8.5 hours a day, that will make it 32 to 34 hours of work per week. If you understood that right, the first question that will come to your mind will be कि इसका मतलब है हर एम्प्लॉय को कम काम करना होगा, वो भी सेम सैलरी में जो उन्हें अभी मिल रहा है. तो कोई भी कंपनी अपने सही मानसिक स्थिति में इसको अडॉप्ट करेगा ही क्यों? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स प्रॉफिट से ड्रिवन होते हैं. उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जीने देने का ठेका थोड़ी लेके रखा है. एंड योर skepticism is completely valid. But there are some reasons why the company you're working for might consider adopting this. Well, among many reasons, increased productivity tops the chart. So let me run this down in a very fast way. When it comes to increased productivity, आप कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल या दूसरा कोई यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो, सब माइक्रोसॉफ्ट जापान का एग्जांपल तो देने ही वाले हैं. यूसी माइक्रोसॉफ्ट जापान ने अपने एम्प्लॉयज को एक दिन आके बोला कि भाई और बहनों, आज से आप लोग का फ्राइडे से छुट्टी. एंड एम्प्लॉयज लोगों ने उसका जवाब कैसे दिया? बाय बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी बाय 40%. सिर्फ यही नहीं, परपेचुअल गार्डियन ऑफ न्यूजीलैंड, एमआरएल रिक्रूटमेंट ऑफ यूके, शेक शैक ऑफ यूएस, ऑल एक्सपीरियंस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इवन बेरवाइंसी, एक इंडियन कंपनी, सॉ ए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ 200% इन द 4 years that they have implemented it. But उतना ही नहीं, इस स्ट्रक्चर के वजह से एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी काफी अच्छा असर पड़ता है इन मेनी डिफरेंट वेज. फर्स्ट, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस विद सम रिपोर्टिंग अ डिक्रीज ऑफ 45 to 38%. लोग ज्यादा खुश रहते हैं विद वर्क हैप्पीनेस इंक्रीजिंग फ्रॉम अ रेटिंग ऑफ 3.9 to 4.2. इनफैक्ट वर्क लाइफ बैलेंस में भी काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एक ऐसी चीज जो हम इंडियंस बिल्कुल ही भूल चुके हैं. परपेचुअल गार्डियन ऑफ न्यूजीलैंड सॉ देयर वर्क लाइफ बैलेंस स्कोर्स इंक्रीज फ्रॉम 54% to 78%. Again, the Barrow INC also reported an employee satisfaction rate of 4.3 on a scale of 5. And of course, a rise of higher autonomy has also been reported. इसका मतलब क्या है? Well, higher autonomy का मतलब है जहां एक एम्प्लॉय खुद ही अपना काम कर लेता है और उसके सुपरवाइजर को पूरा दिन उन्हें माँ बहन की गाली देके काम नहीं करवाना होता. Coming back to normalcy, with all that in mind, कोई भी आराम से बोल सकता है कि कोई गधा कंपनी ही होगा जो ये स्ट्रक्चर नहीं अपनाएगा. If you are thinking that way, you are probably partially wrong. You see, this is where you need to know about the proposal that Labor Ministry forwarded. According to the new proposal, कंपनियों के पास ये flexibility जरूर रहेगा कि वो अपने workforce को 4-day work week में स्ट्रक्चर कर सकता है. But there's a huge but here. The number of working hours में उन्होंने कुछ changes नहीं किए, which still remains at 48 hours per week. This means your company, if they choose to accept this structure, can ask you to work for 12 hours a day excluding breaks ताकि उनको नुकसान ना हो. Now that's the biggest problem here, because even though you might have 3 days to recover from your high stress work environment by working long hours, the business might not enjoy the benefits we just talked about earlier. Employee engagement में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, but the daily work pressure will become too much to handle, and this might inversely affect productivity and other business metrics. और ऐसी बात नहीं है कि हम इंडियंस 12 घंटा काम नहीं कर सकते. हम लोग दुनिया के सबसे ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड लेबर फोर्स में ऐसे ही नहीं आ जाते. ये 3 भी लाइन पे हैं, बट कम ऑन, पॉपुलेशन का भी तो थोड़ा अलग भाव है, राइट? Coming back to the main point, this whole thing will take away the biggest gift that this structure comes bearing for the working class and for the youth in general, and that gift is a hope for financial freedom. Yes, that's correct. A 4-day work week, if implemented with reasonable sensibility, can pave your path for financial freedom for anybody who wishes for it. कैसे? Well, time of course. You see, आप जब किसी के लिए काम करते हो, चाहे वो कोई आदमी हो या ऑर्गेनाइजेशन, you get wages or salary as per the services rendered by you. This is called active income. यहाँ आपका active participation mandatory है. आप रहोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो घंटा मिलेगा. But with a 3-day off per week, if you calculate it properly, you get around 12 to 14 days of available time a month. That's a hell of a time for anybody to either focus on higher studies, focus on upskilling themselves for high-paying jobs, get a new skill set to start freelancing, or
to start their very own business, all without having to jump off that cliff of financial risk. Alright. In just 6 months, you get around 2.5 months of time, and in a year, you get just a little over 5 months at your disposal to work on various side projects and create sources of passive income, or even start your own YouTube channel. The possibilities are only limited to your imagination. But again, ये तभी पॉसिबल है अगर प्राइवेट कंपनियां एक रीजनेबल स्केल में ये इंप्लीमेंट करती है, ताकि कंपनी का भी ग्रोथ हैम्पर ना हो, ना ग्रोथ हैम्पर हो एम्प्लॉय का. द परफेक्ट बैलेंस टू फाइंड अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन and help boost India's economy without even trying to think about it. Or you can just, doze off for the 3 days that you get as a holiday. The choice is always yours, my friend.